हाय स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी टेक चैनल। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर विल वर्क ऑन A AC only, B DC only, C AC as well as DC, D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, AC only। We know that transformer will work on only AC supply। Next, transformer work on the principle of A dynamic induction, B Fleming's law, C Faraday's law of electromagnetic induction, D Joule's law। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, Faraday's law of electromagnetic induction। Basically Faraday's law of electromagnetic induction is consist of two laws। तो चलिए देखते हैं। First law of electromagnetic induction is whenever conductor is placed in a varying magnetic field and electromotive force is induced। यह है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है the induced EMF in the coil is equal to the rate of change of flux linkage and the formula of Faraday's law is E is equal to minus n d phi by dt। यहाँ पे E means electromotive force, n means number of turns and phi means magnetic flux। Next, basic function of transformer is to change A frequency level, B power level, C energy level, D voltage level। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, द वोल्टेज लेवल। ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी एंड पावर हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट, a transformer operates poorly at low frequency because A permeability of core is increased, B magnetizing current is abnormally high, C primary reactance is too much increased, D none of the above। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटाइजिंग करंट इज abnormally high। Next, leakage flux in transformer occurs because A iron core has high permeability, B air is not a good insulator, C applied voltage is sinusoidal, D transformer is a not efficient device। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, air is not a good insulator। Leakage flux in transformer occurs because air is not a good insulator। Next, the primary leakage flux links A primary winding only, B secondary winding only, C both primary and secondary, D none of the above। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, प्राइमरी वाइंडिंग ओनली। देखिए यहाँ पे अगर मेन फ्लक्स होता तो उसका करेक्ट आंसर आ जाता ऑप्शन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बिकॉज मेन फ्लक्स लिंक्स with primary as well as secondary winding, but leakage flux links only with primary winding। Next, in transformer, electrical power transferred from primary to secondary, A through insulating medium, B through air, C by magnetic flux, D none of the above। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, by magnetic flux। ये काफी आसान था। Next, the efficiency of power transformer is around A 50%, B 70%, C 80%, D 95%। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 95%। The efficiency of transformer is high as compared to other machine because transformer is a static device। तो इसमें रोटेशनल लॉसेस डायरेक्टली जीरो हो जाते हैं। That's why transformer efficiency is high as compared to other machine। Next, transformer action requires A alternating magnetic flux, B constant magnetic flux, C alternating electric flux, D constant electric flux। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, alternating magnetic flux, because we know that transformer works only on AC supply। Next, the core flux in transformer mainly depends upon A supply voltage, B supply frequency, C supply current, D both A and B। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, both A and B। The core flux in transformer mainly depends on supply voltage and supply frequency। Next,
In a power transformer, primary and secondary winding have A. Same number of turns, B. Separate magnetic circuit, C. Common magnetic circuit, D. Wire of same size. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉमन मैग्नेटिक सर्किट है। Next, the flux in a transformer core A increase with load, B decrease with load, C remains constant irrespective with load, D none of the above. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, remains constant irrespective with load, because we know that transformer is a constant flux device because it follow Lenz's law. Next, during starting, the magnetic field produced in a transformer is A. 1.5 times the maximum, B. equal to the maximum, C. 0.5 times of the maximum, D. equal to 0. इसका correct answer आ जाएगा option D, 0, because at the starting magnetic field produced in transformer is always 0. Next, for transformers, rating are always given in kVA, not in kW, because A. it is conventional, B. power factor of load is not known, C. for higher efficiency, D. to make calculation simple. इसका correct answer आ जाएगा option B, power factor of load is not known. That's why transformers rating are always in kVA, not in kW. Next, the primary ampere turns are counterbalanced by A. primary flux, B. secondary flux, C. secondary ampere turns, D. mutual flux. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स। प्राइमरी एम्पियर टर्न्स आर ऑलवेज काउंटर बैलेंस्ड बाय सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स। नेक्स्ट, पावर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इज मेनली डिपेंड्स अपॉन ए. सप्लाई वोल्टेज, B. number of primary turns, C. supply current, D. magnetic coupling between primary and secondary winding. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट, द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड कैन बी ड्रॉन ओनली इफ वी नो ए. लोड पावर फैक्टर, B. लोड करंट, C. इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर, D. ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। द फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन लोड can be drawn only if we know load power factor, load current and equivalent circuit parameter of transformer. Next, the color of fresh dielectric oil used in a transformer is A. pale yellow, B. pale brown, C. pale pink, D. pale blue. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, pale yellow. Next, the core and winding of a transformer are put in a steel tank in order to A. improve its appearance, B. provide protection against mechanical damage and provide additional cooling, C. make it suitable for outdoor operation, D. all of the above. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, provide protection against mechanical damage and provide additional cooling. Next, in a constant voltage transformer यानी कि CVT, the output voltage remains constant due to A. capacitor, B. inductor, C. saturation, D. all of the above. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, saturation. In constant voltage transformer, the output voltage will always constant because of saturation. Next, high leakage reactance transformer are of A. small volt ampere rating, B. large volt ampere rating, C. high voltage rating, D. high current rating. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, small volt ampere rating means when leakage reactance of transformer is increased, the rating of transformer will always decreases. Next, a tap changer is used on a transformer for adjusting the A. primary voltage, B. secondary voltage, C. primary current, D. secondary current. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, secondary voltage. We use tap changer for adjusting the secondary voltage. यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि why tappings are provided on HV side.
सो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज इन हाई वोल्टेज साइड करंट इज लेस एज कंपेयर टू लो वोल्टेज साइड, दैट्स व्हाई टैपिंग आर ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन हाई वोल्टेज साइड. Next, when the rating of transformer increases, the supply frequency of transformer is A increases, B decreases, C remains constant, D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए increases because in transformer kVA rating is directly proportional to frequency. Next, overcurrent in a transformer adversely affect A insulation life, B mechanical strength, C both A and B, D none of the above. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. ओवर करंट इन ट्रांसफॉर्मर एडवर्सली अफेक्ट इंसुलेशन लाइफ एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड अपॉन ए स्टैटिक इंडक्शन, बी डायनेमिक इंडक्शन, सी म्यूचुअल इंडक्शन, डी ऑल ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी म्यूचुअल इंडक्शन. द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज mainly based upon mutual induction. Next, in an ideal transformer on no load, the primary voltage is balanced by A primary current, B primary induced voltage, C secondary current, D secondary induced voltage. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज. In ideal transformer on no load, primary voltage is always balanced by primary induced voltage. Next, star-star transformer operates satisfactorily only when the load is A unbalanced, B balanced, C both A and B, D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी बैलेंस्ड because star-star transformer operates satisfactorily only when the load is balanced. Next, transformer breathes in when its load A decreases, B increases, C constant, D all of the above. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए decreases. Transformer breathes in when its load decreases and transformer breathes out when its load increases. Next, a current transformer must never be operated with its A primary winding kept open, B secondary winding kept open, C both A and B, D none of the above. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी सेकेंडरी वाइंडिंग केप्ट ओपन. रिमेंबर दैट secondary side of CT are always short circuited in order to avoid core saturation and high voltage induction. Next, when transformer first energized, the transient current during first few cycle is A less than the full load current, B much higher than full load current, C equal to the full load current, D none of the above. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी much higher than full load current. Next, EMF equation of transformer is A 4.43 Fn phi m, B 4.44 AFN, C 4.44 Fn phi m, D 2.44 Fn phi m. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 4.44 Fn phi m. यहाँ पे F means supply frequency, N means number of turns and phi m means maximum flux. आज के लिए इतना ही. Thank you for your time. Please subscribe my channel and press the bell icon to get my new video updates.